Hello students, today we are going to study the topic extraction of metals. So before starting the lecture, I would like to remind you to subscribe my channel to get regular video upload updates, right? So we begin with occurrence of metals, okay? So the Earth's crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salts like sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which naturally occur in the Earth's crust, they are called minerals. So this is a very important definition. So just learn this definition. And then we define ores. Okay, at some places minerals contain a very high percentage of a particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. Okay, so these minerals are called ores. So generally in exams, sometimes the difference between minerals and ores is asked. So you can just state these definitions. Now let us understand the extraction of metals. Okay. So you have learnt about the reactivity series of metals. अगर आपने previous lectures नहीं देखे हैं, just go through them. उसमें हमने detail में reactivity series discuss की है. Okay. So having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Okay. Some metals are found in the Earth's crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. They are often found in a free state. For example, gold, silver, platinum, copper. These are found in free state. Free state means क्या जैसे आपने dig किया अर्थ को and somewhere gold will be found. Okay? क्योंकि gold कम reactive है तो उसने water के साथ air के साथ react नहीं किया होगा and it will be in the free form only. Okay? Copper and silver are also found in combined state as their sulfide or oxide ores. Okay, क्योंकि वो combine कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ तो वो ores form कर लेते हैं, right? Metals are the top of the active series like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum. They are so reactive that they are never found in nature as free elements. Okay. And the metals in the middle of the activity series like zinc, iron, lead, they are moderately reactive. They are found in the Earth's crust mainly as oxides, sulfides, carbonates. Okay. तो आपको क्या करना होता है जैसे वो ऑक्साइड फॉर्म में है और आपको प्योर मेटल फॉर्म में चाहिए तो आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा उसे. Okay. You will find that the ores of many metals are oxides. This is because oxygen is a very reactive element and it is very abundant on the earth too. Okay? So here comes the activity series and the related metallurgy. So we see potassium is the most active, then sodium, calcium, magnesium and so on up till gold, right? So if we see their segregation, gold and silver, they are found in native state. Zinc, iron, lead and copper, they are reduced using carbon and the top ones are done using electrolysis. Okay. So metals of low reactivity, these are metals of low reactivity. Then there are metals of medium reactivity, then high reactivity. So different techniques are used for obtaining metals falling in each category. Okay. Next comes the steps involved in the extraction of metals from the ores. अब आपने अर्थ को डिग किया, आपको ओर फॉर्म में तो मिल गया, वो एक कंपाउंड है जिसमें से आपको प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. जस्ट लर्न दिस आउट. ओके, इसमें हर स्टेप आपको डिटेल में आगे स्टडी करना होगा. फाइन. सो जो हमारा ओर है, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं फर्स्ट स्टेप. सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स रिएक्टिविटी. जैसे मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी के हैं उनका हम अलग मेथड यूज करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, इनके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे. तो पहले हम हाई रिएक्टिविटी का देखते हैं. व्हाट वी डू, हम मोल्टन ओर को लेते हैं, उसे मेल्ट कर लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने से हमें प्योर मेटल मिल जाता है, राइट? लो रिएक्टिविटी में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स आर देयर. ओके, उसकी हम रोस्टिंग करेंगे. वी विल सी इन डिटेल रोस्टिंग क्या होता है. उससे हमें मेटल मिलता है, फिर हम उससे रिफाइन करते हैं. ऑलराइट. देन मीडियम रिएक्टिविटी में आपके पास कार्बोनेट ओर भी हो सकते हैं, सल्फाइड ओर भी हो सकते हैं. कार्बोनेट ओर में आप कैल्सिनेशन प्रोसेस करोगे, सल्फाइड ओर में रोस्टिंग प्रोसेस करोगे. And after calcination or roasting, whatever you choose, then you do oxide of metal is obtained. Okay, you reduce that to metal and then further you purify the metal.
तो इस चार्ट में से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. जस्ट लर्न दिस. Thank you so much for watching the lecture and stay tuned for more lectures.